Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे। प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत, नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। Breaking 6 sessions falling trend, domestic stocks close marginally higher. Sensex ends at 37,883. Nifty settles at 11,284. Rupee appreciates 15 paise against US dollar. And Brent crude prices log modest gain amid geopolitical tensions over Iran. 6 दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला तोड़ते हुए घरेलू बाजार मामूली बढ़त पर हुए बंद। सेंसेक्स 37,883 पर बंद हुआ। निफ्टी 11,284 पर रहा। रुपया डॉलर के मुकाबले 15 पैसे मजबूत हुआ और ईरान से जुड़े भू राजनीतिक तनावों के बीच ब्रेंट कच्चे तेल में मामूली बढ़त हुई दर्ज। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। 6 दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला तोड़ते हुए प्रमुख बाजार सूचकांक मामूली बढ़त पर बंद हुए। ये बढ़त प्रमुख रूप से चुनिंदा वित्तीय और निजी बैंकों के शेयरों में तेजी के बल पर आई। कारोबारियों के अनुसार हालांकि कॉर्पोरेट आमदनी के आंकड़े आशा से कम अच्छे आने, विदेशी फंडों की भारतीय बाजार से बिकवाली और वैश्विक रुख कमजोर रहने का दबाव बाजारों पर जारी रहा। अगले 2 हफ्तों में औसत से अधिक बारिश की आशाओं से निवेशकों की धारणा कुछ हद तक उत्साहित हो गई। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.14% की तेजी से 52 अंक बढ़कर 37,883 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.29% की तेजी से 32 अंक बढ़कर 11,284 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां भी बढ़त का ही रुख था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.53% की तेजी पर बंद हुआ। स्मॉल कैप सूचकांक में 0.22% की बढ़त दर्ज हुई। Snapping its 6-session falling streak, equity benchmark, the BSE Sensex today ended marginally higher, led by select finance and private bank stocks. Traders said while subdued corporate earnings, foreign fund outflows and weak global cues continue to weigh on the markets, hopes of above average rainfall in the next 2 weeks buoyed investor sentiment to some extent. After a choppy session, the 30-share Sensex ended 52 points or 0.14% higher at 37,883. Similarly, the broader NSE Nifty rose 32 points or 0.29% to settle at 11,284. The S&P BSE Mid-Cap Index rose 0.53% and the Small Cap Index rose 0.22%. The market breadth was positive. On the BSE, 1,321 shares rose and 1,187 shares fell. A total of 155 shares were unchanged. During the week, the Sensex lost 454 points or 1.18%, while the Nifty fell 135 points or 1.18%. Yes Bank was the top gainer. The Sensex pack today, rallying 9.6%. Bajaj Finance soared 7.2%. Other gainers included Hero MotoCorp, Mahindra & Mahindra, Bajaj Auto, Tata Motors, Asian Paints and Kotak Bank, rising up to 3.2%. Maruti Suzuki inched up 0.78%. Vedanta, Reliance Industries, Bharti Airtel, ONGC, HDFC Tech, Mahindra, HCL Tech and Infosys were among the top losers, falling up to 4.3%. Sectorally, the BSE Auto, Bankex, Capital Goods, Healthcare, Industrials, Finance and Consumer Durable indices ended up 2% higher. However, energy, IT, tech, oil and gas, utilities and power lost up to 1%. Puneet, how are you looking at the markets today, especially the bank Nifty with select stocks going up, especially with private equity participation? So Arjun, of course, today's rebound in bank Nifty stocks, banking and finance stocks primarily, we must see that in context of what has happened in financial stocks in the past 1 week. We saw a very sharp fall. In fact, Bank Nifty fell almost 2,000 points, almost 6-7% in the past 1 week or 10 days. And to that extent, I think the rebound today was
partly short covering, I would say, or you could say it could be value buying by select stocks. We've seen stocks like HDFC Bank, HDFC, Kotak Mahindra Bank, Bajaj Finance. They were all favorites of the market until recently, and they fell very sharply by 10% in the past 1 week. I think today the markets were kind of recouping a little bit of those losses. Also, the numbers that have now come in, we're seeing the results season unfold, and selectively we've seen numbers come from automobile sector, we have seen numbers from financial sector. Some of them have been better than expected. Some of them have been along expected lines, although they have been bad compared with last year. But I think so far corporate numbers have been disappointing because they've fallen, but market was already expecting. What about inventory build-ups in the auto sector? That went up today. So automobiles is a very interesting story in the sense that we have seen very sharp fall in automobile production, automobile numbers. In fact, I was just reading one of the data points from Federation of Automobile Dealers. And they pointed out that more than 270 dealerships, auto showrooms have closed in India in last 1 year. And that's almost one showroom shutting down every day in last 1 year. So clearly it is the auto sales are on downhill right now. But that is already built into stock prices to some extent. So if you look at Maruti, it has fallen very sharply, 45% from the top. We have seen other automobile stocks also coming down sharply in the last 1 year. So I think to some extent, some of these are now value buys, given the long-term prospects for the Indian economy. So I would say this is bottom fishing to an extent. But there is no rush also. I don't expect there will be a V-shaped kind of a recovery in these valuations. Probably they'll just get long until we see some visibility on turnaround in the sentiment. Well, let's have a look at some of the corporate earnings. Punjab National Bank today posted a standalone net profit of around 1,119 crores in first quarter of this fiscal. Bank had posted a net loss of 940 crore rupees during the corresponding April to June period of 2018-19. Vodafone India Limited narrowed its consolidated loss to around 4,874 crore rupees for the June 2019 quarter. The company today said in a regulatory filing, the company had registered a loss of around 4,882 crore rupees in the fourth quarter of 2018-19. Maruti Suzuki India today reported 31.7% decline in consolidated net profit at around 1,377 crore rupees for the first quarter ended 30th last month. Bajaj Auto posted 2.8% decline in its consolidated net profit at 1,012 crore rupees for the first quarter of the current fiscal. पुनीत, आज जो ये आए हैं रिजल्ट्स, हमने देखा है कि ऑटो सेक्टर में खासी तेजी है. सो आपको लगता है कि जैसा आप कह रहे थे कि वैल्यूएशंस वहां बहुत अट्रैक्टिव हैं, इसलिए ये तेजी है, या कहीं ना कहीं शायद बाजार को ये लग रहा है कि अब बॉटम आउट हो गया है ऑटो सेक्टर में, जो हम स्लो डाउन देख रहे थे, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट्स घटाने की आशा है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स घटाएगा, जो ऑटो सेक्टर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है. लिक्विडिटी पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि आरबीआई और गवर्नमेंट मिलके जो लिक्विडिटी सिचुएशन है एनबीएफसीज की, बैंक्स की, उसको इंप्रूव करे. क्रेडिट ऑफटेक पर बहुत फोकस है. सो इन सब चीजों को देखते हुए और मॉनसून की जो अब हम पिकअप देख रहे हैं अगले 2 हफ्तों में, जो एक आशा है उससे जो रूरल सिचुएशन इंप्रूव होगी, आपको लगता है ये सब पॉइंटर्स हैं कि अब ऑटो सेक्टर के लिए आगे शायद ग्रीन शूट्स दिखाई दें? तो सुनो, देखिए, जो आज 2 महत्वपूर्ण रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं और दोनों ही बहुत बड़ी कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में. मारुति सुजुकी, जो लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कार मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, उनके जो रिजल्ट्स आए 32% उनका प्रॉफिट वो कम आया, लेकिन उम्मीद से बेहतर है. बिकॉज मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी 50% फॉल इन नेट प्रॉफिट, और उसकी जगह उन्होंने 32% फॉल अनाउंस किया. तो टू सम एक्सटेंट ऐसा लगता है कि शायद उनका प्रदर्शन आने वाले समय में उम्मीद से बेहतर हो. साथ ही बजाज ऑटो, जो अगेन 2 व्हीलर सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है, बहुत डोमिनेंट पोजीशन है उनकी, वहाँ भी उनका फ्लैट रिजल्ट्स आए, करीब 2% 3% प्रॉफिट उनका बढ़कर के आया, डिक्लाइन आया उनका, लेकिन वहाँ भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन था. तो मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखिए बहुत स्ट्रेस है. जैसे मैंने बताया कि 270 ऑटो शोरूम्स पिछले 1 साल में बंद हो गए, सेल्स में काफी गिरावट आई है, एनबीएफसी से जो लोन्स नहीं मिल रहे कंज्यूमर्स को, वहां पर बहुत अफेक्ट है. तो काफी नेगेटिव्स जो हैं वो बिल्डिंग है इस नंबर्स में जो हम देख रहे हैं.
क्या आने वाले समय में आपने कई पॉजिटिव्स गिनाए, मानसून बेहतर हो सकता है, सरकार का कोशिश है कि जो एनबीएफसीज की जो लिक्विडिटी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो, बैंकिंग क्षेत्र से भी लिक्विडिटी पंपिंग करने आरबीआई कोशिश कर रहा है, तो काफ़ी कोशिशें चल रही हैं जिससे कि ये टर्न अराउंड हो सके ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो मैं ये कहूँगा कि वो पॉजिटिव्स हैं, लेकिन अभी वो नंबर्स आने बाकी हैं। ये कंफर्मेशन कि ये टर्न अराउंड हो गया है ये शायद अगले महीने हो या उससे नेक्स्ट क्वार्टर में हो, ये अभी मालूम नहीं है। ऐसा लगता है कि उसके लिए कोशिशें जारी हैं और वहां पर टर्न अराउंड हम देख सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण रिजल्ट अर्जुन ने बताया, पंजाब नेशनल बैंक, जहां पर 1000 करोड़ का प्रॉफिट सॉरी आया, और ये भी उम्मीद से बेहतर है क्योंकि पहले बहुत बड़ा लॉस था और इस क्वार्टर में भी हम लॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 1000 करोड़ का जो प्रॉफिट आया वो भी उम्मीद से बेहतर है। तो मुझे लगता है ये कुछ मिक्स्ड ये रिजल्ट्स हैं। हमें लगता जैसे टेलीकॉम सेक्टर में वोडाफोन के में लॉस आया काफी बड़ा, तो ये मिक्स्ड पिक्चर है। इनफैक्ट जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें अगर हम देखें बजाज फाइनेंस का 43.8% इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट। सो जो एक डूम और ग्लूम की जो एक इम्प्रेशन है अबाउट फाइनेंस सेक्टर में भी वो कुछ कंपनीज तक ही सीमित है और बाकी जो कंपनीज हैं उनकी बैलेंस शीट हेल्दी है। क्या पोजीशन है आप बताएं? देखिए, एनबीएफसी सेक्टर बहुत ही मुख्तलिफ कंपनियों का एक सेक्टर है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं जैसे बजाज ऑटो टाइप की, जिनका मार्केट कैप करीब 2 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है उनकी। भारत की टॉप 10 मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी में करीब आती है कंपनी है। तो वहाँ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि उन्होंने भी ये कहा है अपनी कमेंट्री में कि आने वाले समय में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी डिसबर्समेंट्स कम होंगी या उनके लोन्स उतने ज़्यादा वो नहीं दे पाएंगे। तो वहाँ भी कुछ प्रेशर तो है, स्ट्रेस है, लेकिन डूम एंड ग्लूम जो आपने जो बात कही वो नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ हम अभी और समय, शायद 3 महीने या 6 महीने हम देखेंगे कि रिपेयर होंगी बैलेंस शीट्स। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में मे बी बाय एंड ऑफ दिस ईयर सीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, things could begin to improve around end of There was a this lot of speculation about Jet Airways getting private equity infusion into it so that it can recover lost ground and get away from the insolvency and bankruptcy proceedings. We're seeing Yes Bank enjoying private equity infusion by 2 players. At least that's what the media reports are saying. What is it that these outside investors are seeing in Yes Bank, which has been riddled with internal problems? So Yes Bank and Jet Airways are typical cases. I wouldn't say that Yes Bank is symptomatic of the problems in the sector per se. Yes Bank had some of its own issues in terms of risk management, in terms of bad loans, in terms of corporate governance. So what has happened is that as a franchise, it appears that investors seem to value it. However, they do not, of course, give it a very large valuation. They will invest in it at a very lower valuation, which is so the stock has actually fallen more than 75% in last 1 year. So clearly, at a reduced valuation, there may be investors in the company, and also the original promoter of the bank may no longer be able to, because their stake will get diluted, and they will no longer be able to call the shots in the bank. I think that is what market is liking about the bank, that it will be a professional company which will be running as a banking operation. So I think to that extent, and even in case of Jet Airways, there's an inherent valuation in the times, in the slots, in their brand equity. So I think there are efforts to rescue these companies. Isn't there a deeper concern about investor disclosure, about their financial performance? We've seen criticism about public sector banks which do disclose what their position is, but private sector banks have had taken a backseat earlier, and now they are getting they're feeling the full impact of their financial performances being disclosed to the public. So Arjun, again, in private sector bank, there are all kinds of banks. So there are banks which are very high corporate governance standards, like HDFC Bank. We've seen some other private sector banks being respected in the markets, and therefore they get very high valuations. Yes Bank at some point of time was also considered to be a very blue chip kind of a banking company, but then subsequently it emerged that they did not have that kind of transparency
in their operations, and they were not honest in investors, and consequently they lost the market cap. And I think we can't put them all in one basket. I think they're different banks, and whoever is not adhering to good standards of governance, I think they're getting punished by the markets. मुनीत, अगर हम एफपीआईज की बात करें तो एफपीआईज ने जुलाई में 14,300 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग करी है हमारे भारतीय बाजार से, और जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने 6,950 करोड़ की नेट बाइंग करी है सो फार इन दिस मंथ. सो जो आउटफ्लो है एफपीआईज का, उसको अभी इस दौर में एमएफ्स नहीं वो कर पा रहे हैं, उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं जैसा हमने पहले कई बार देखा था. सो भी क्या सिचुएशन आपको दिखाई देती है? कब तक आपको लगता है कि एफपीआईज का जो आउटफ्लो है वो टेपर आउट होगा? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भी है और काफी जटिल सवाल है, क्योंकि एफपीआईज की जो सेलिंग हुई है भारत में 13-14 हजार करोड़ की अभी तक इस महीने में, वो काफी भारी सेलिंग है. बिकॉज शायद पिछले 2 वर्षों में ये चौथा या पांचवा ऐसा महीना होगा कि जहां पर इतनी हैवी सेलिंग हमने देखी है. और ये थोड़ी सरप्राइजिंग भी है, क्योंकि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है वो सरप्लस लिक्विडिटी का है. इनफैक्ट यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कल ही बोला है कि वो क्वांटिटेटिव ईजिंग और इंटरेस्ट रेट भी कट करेंगे, और क्वांटिटेटिव ईजिंग शायद दोबारा से शुरू करेंगे सितंबर में. और साथ ही यूएस फेडरल रिजर्व भी इस आने वाले सप्ताह में उनकी मीटिंग है, और वो 100 मतलब काफी सर्टिनिटी हम कह सकते हैं. इंटरेस्टिंगली उनका इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी -0.4% है. तो हाँ, पर तो इसलिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक में इंटरेस्ट रेट कट तो शायद बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन क्वांटिटेटिव ईजिंग जहां पर वो बॉन्ड बायबैक करके लिक्विडिटी पंप करते हैं, वो काफी ज्यादा वो कर सकते हैं. और यूएस में भी हम टू सम एक्सटेंट हम इंटरेस्ट रेट्स कम देखकर मॉनेटरी ईजिंग देखेंगे. तो ऐसा माहौल है विश्व में कि काफी लिक्विडिटी सरप्लस है, और एफआईआईज ऐसे माहौल में इन्वेस्ट करते हैं इमर्जिंग मार्केट्स में, और उन्होंने ऐसा किया भी है दूसरी इमर्जिंग मार्केट्स में. भारत में शायद कुछ हद तक कुछ नीतियों को लेकर, टैक्सेशन इश्यूज को लेकर, और कुछ हद तक जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं भी फिलहाल, उनको लेकर भारत में सेलिंग रही है एफआईआईज की. मुझे उम्मीद है कि गिवन वेरी लार्ज लिक्विडिटी पुश इन द ग्लोबल सिचुएशन, और बहुत ज्यादा सरप्लस लिक्विडिटी आने वाली है ग्लोबल मार्केट्स में, तो मुझे उम्मीद है कि एफआईआईज की बाइंग आएगी आने वाले और वैल्यूएशंस भी अब भारतीय बाजार में अट्रैक्टिव हो गई हैं. पहले से बेहतर है, तो दे शुड बी समवॉट मोर अट्रैक्टिव डेफिनेटली. चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले देखते हैं कि करेंसी बाजार में क्या प्रदर्शन रहा. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 15 पैसे की मजबूती दर्ज करता हुआ 68.89 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. घरेलू शेयर बाजार में सुधार के बाद रुपए में 4 दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला टूट गया. कल रुपए का स्तर 69.04 प्रति डॉलर के स्तर पर था. क्या कहेंगे आप, रुपए में जो हम 4 दिनों की गिरावट के बाद आज एक बढ़त देख रहे हैं, रुपए में स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, खासकर ये देखते हुए कि सरकार की एक योजना आई है $10 बिलियन के विदेशी सॉवरेन बॉन्ड जारी करने की? सुन, देखिए, नॉर्मल कोर्स में अगर जिस प्रकार की सेलिंग हमने एफआईआईज के द्वारा देखी है, अगर ऐसी सेलिंग हम होती तो ये रुपये में काफी भारी गिरावट आती. लेकिन हम देख रहे हैं कि रुपया जो है वो अभी भी 68.50 और 69 के बीच में स्टेबल है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है भारत की, उसको लेकर के हमने ये स्टेबिलिटी देखी है. और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अक्टूबर में या नवंबर के महीने तक सरकार $10 बिलियन सॉवरेन बॉन्ड्स इशू करके, हालांकि उसकी रूपरेखा अभी क्लियर नहीं है कि क्या वो बॉन्ड्स डॉलर में इशू करेंगे या वो डोमेस्टिक करेंसी में इशू करेंगे. अभी उसको लेकर थोड़ा शायद येन और यूरो की भी बात की जा रही है. तो सारी ऑप्शन भी टेबल पर हैं. येन और यूरो में भी हम इशू कर सकते हैं. यूएस डॉलर में इशू करना आसान होता है. अगर आप येन और यूरो में इशू करते हैं बॉन्ड्स, तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है वो. उसमें एफआईआईज जो इन्वेस्ट करने वाले हैं वो लोग बहुत कम हो जाते हैं. और अभी ये चर्चा भी चल रही है कि शायद हम फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेट करने के बजाय वो डोमेस्टिक करेंसी में डिनोमिनेट करें, जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो है वो इन्वेस्टर्स के उसके रहेगा अकाउंट में. तो अभी ये सब चीज़ें मैं ये कहूँगा कि इसकी रूपरेखा साफ नहीं है, आने वाले समय में साफ होगी. उसका असर हम रुपए पर बाद में देखेंगे. अभी तो मुझे लगता है कि एक करंट हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो रिकॉर्ड लेवल पर हैं. $440 बिलियन पे हम बैठे हुए हैं. विश्व की शायद सेकेंड और थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व होंगे हमारे ये. तो मुझे लगता है कि रुपया इसी वजह से स्टेबल है. There are two aspects here. One is debt servicing on sovereign bonds if the borrowing is in US dollars, and the second aspect is that is the US dollar become weaker despite the US markets going up as a result of the US-China trade war?
So US dollar actually has kind of now stabilized in a very narrow range of the US dollar index, and in terms of index it is now between 96 and 98, so it is kind of staying there. If the US Federal Reserve goes ahead and cuts interest rates and increases monetary stimulus, then the dollar will weaken further. To some extent, I think that will also give stability to the Indian rupee and other emerging market currencies. So dollar is really linked closely to that. Secondly, we've seen gold prices go higher, and dollar is always inversely proportional to gold to some extent, and therefore the trend is towards weakening. If you ask me, I think the medium-term trend on dollar, US dollar, is towards the weakening side. As far as India is concerned, we have a large trade deficit, and that I think keeps putting pressure, exerting more and more pressure on the rupee. But so there are many factors actually, honestly. But I think on balance, rupee will remain stable in the 69-70 range, giving an opportunity to India to raise bonds, whether they want to do it in rupee terms or in dollar terms. See, if we raise money in rupee terms, the coupon or the interest rate will be higher. If we do it in dollar terms, the interest rate will be lower. Government has to take a call where it wants to put the risk. एंड ज़्यादा डेप्रिसिएशन में ये भी एक डर रहता है कि अमेरिका द्वारा करेंसी मैनिपुलेशन की जो एक फिर एक्यूजेशन आती है, जो ऑलरेडी उन्होंने चीन पे और यूरोप पे लगाई है, करेंसी वॉर्स जिसे हम कहते हैं. देखिए, अभी भारत का स्थान विश्व की इकोनॉमी में उतना बड़ा नहीं है कि वो हम करेंसी मैनिपुलेट कर सके, पर मुझे लगता है ये है कि अभी ये शुरुआत है, जैसे हम फॉरेन बॉन्ड्स इशू करना चाहते हैं, लेकिन आने वाले समय में इसका क्या रूपरेखा होगी अभी कहना मुश्किल है. उसके लिए चर्चा आगे बढ़ाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं. अधिकांश दक्षिण पूर्वी एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट आई. यूरोपीय केंद्रीय बैंक की ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने के फैसले के बाद निवेशकों ने जोखिम वाली परिसंपत्तियों को बेचना बेहतर समझा. विशेषज्ञों के अनुसार निवेशक अब अतिरिक्त संकेतों के लिए अगले सप्ताह होने वाली यूएस फेडरल रिजर्व की बैठक पर ध्यान केंद्रित करेंगे. जापान का निकेई सूचकांक और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक प्रत्येक लगभग 0.5% की गिरावट पर बंद हुए. हांगकांग का हैंगसेंग 0.7% और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.4% के नुकसान में रहे. हालांकि चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.2% की बढ़त पर बंद हुआ. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां बढ़त का रुख था. लंदन का फुटसी 0.6%, फ्रांस का कैक 0.5% और जर्मनी का डैक्स 0.3% की बढ़त पर थे. Moving on to the US market, the US stock index declined yesterday as weak earnings reports of companies again pointed to a slowing global economy. Experts said that investors may be focused on the US Fed Reserve meeting next week for further cues in the coming sessions. Hopes that major central banks would cut interest rate to boost growth and minimize the impact of US-China trade war has helped Wall Street's main indices to hit record highs this month. Dow Jones Industrial Average fell 0.3% and the S&P 500 rose 0.5%. The Nasdaq Composite also surged 0.9%. Puneet, one is the Federal Reserve's action on cutting the interest rate, the discount rate as they're called, and European Central Bank, the decision to hold interest rates steady. Is this a joint exercise by ECB and Fed Reserve, and what does this mean for global markets with easy liquidity? So usually the ECB and US Fed would coordinate their efforts, and I am assuming that again at this point of time they are coordinating the monetary stimulus, so to say. So European Central Bank, while holding the rate steady, have said that they will reintroduce the quantitative easing. Similarly, in the US, Federal Reserve is, in spite of the fact that the US economy is doing very well right now and there's no need for a stimulus, in spite of it, I think the US Fed is going to cut interest rates and keep the doors open for further liquidity induction into the system. So clearly, and these two economies together, the European economy and the US economy together comprise more than 50% of the world economy. So I assume that if these two central banks, in coordination with, let's say, Japan and Korea, would mean a lot of easy liquidity in the world in the next couple of years. So my expectation is that we will see a lot of monetary surplus money supply in the global economy, and even China is doing the same. China is also increasing liquidity in the system. पुनीत, जो अमेरिका की मार्केट है वो रिकॉर्ड हाइस पर पहुंच गई है. क्या लगता है आपको अमेरिका का जो एक मूव था चाइना के अगेंस्ट ट्रेड वॉर शुरू करने का, क्या वो सक्सेसफुल हो रहा है हम कह सकते हैं? क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स में खासी एक
इकोनॉमिक मंदी है, लेकिन यूएस में हम अच्छा प्रदर्शन देख रहे हैं। एंड जो अगले सप्ताह होने वाली है यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स, उससे आपको क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि आईएमएफ ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर सक्सेसफुल होता है तो टैरिफ्स को रोल बैक करना चाहिए। सो देखिए, जहाँ तक स्टॉक मार्केट के से अंदाजा लगाना इकोनॉमी को, ये थोड़ा खतरे वाला काम है। और बेंजामिन ग्राहम जो रिसर्च, इक्विटी रिसर्च के फादर माने जाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी मार्केट को समअप करने के लिए। उन्होंने कहा था कि इन द शॉर्ट टर्म स्टॉक मार्केट्स आर मोर लाइक वोटिंग मशीन्स, बट इन द लॉन्गर टर्म दे आर मोर लाइक वेइंग मशीन्स। तो हम ये देख करके कि S&P 500 रिकॉर्ड स्तर पे है, हम ये ना समझें कि यूएस ट्रेड वॉर, चाइना ट्रेड वॉर का कोई असर, लॉन्ग टर्म असर नहीं है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में इसका असर पड़ेगा। वर्ल्ड इकोनॉमी एक अपनी डायरेक्शन बदलेगी। वो डायरेक्शन कैसी होगी, किसके फायदे में होगी, किसके नुकसान में होगी, अभी ये बहुत एक जटिल सब्जेक्ट है। पर मुझे लगता है कि फिलहाल बिकॉज ऑफ इजी लिक्विडिटी एंड गुड ग्रोथ इन यूएस के जो स्टॉक इंडेक्सेस है वो हाईएस्ट लेवल पे। हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि रिकॉर्ड लेवल पर यूएस स्टॉक मार्केट हो और यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट कर रहा हो। ये एक बिल्कुल नया वो है, नया ट्रेंड है कि कोई खतरा नहीं है इकोनॉमी को मेजर, उसके बावजूद भी यूएस मॉनेटरी स्टिमुलस दे रहा है। तो लेट अस सी व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस। But also the US government depends upon the treasury issue of their bills, notes, and of course the bond itself, the treasury, the three types, short, medium to long term, and they expect emerging markets to buy the bonds which effectively finance the expenditure of their economy. So how are they going to balance these two? One is a bond issue, and while at the same time they're also going for quantitative easing. So quantitative easing is when they buy back bonds and they issue fresh bonds, no? But by buying back bonds, they of course put in liquidity. Usually, what happens, Arjun, is that what they do is they buy back long-dated bonds and they reintroduce short-dated bonds. So clearly, they are not contrary to each other. And while it supports the yields on the longer term, and they can get the yields on shorter term down. That is the objective, really. Well, let's look at some more news. Lok Sabha has taken up the company's Amendment Bill 2019 for consideration and passing. The bill seeks to replace the ordinance and to ensure better accountability and enforcement to strengthen the corporate governance norms. The bill seeks to amend the Companies Act 2013. It aims to tighten corporate social responsibility compliance, transfer certain responsibilities to the National Company Law Tribunal, and recategorize certain offences as civil offences. उधर देश में वर्ष 2018-19 में 37 लाख मीट्रिक टन से अधिक मछली का उत्पादन हुआ। हालांकि भारत की समुद्री जल क्षेत्र से लगभग 53 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हो सकता है। मछली पालन मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने इस बात का खंडन किया कि समुद्री जीव संसाधनों का अधिक दोहन हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी भी समुद्र से कुछ और मात्रा में मछली पकड़ी जा सकती है। Let's have a look at the oil market now. Oil prices today rose as geopolitical tensions over Iran remain unresolved. However, flagging prospects for global economic growth amid the US-China trade war capped the gains. Brent crude prices in intraday trade were trading around $63.70 per barrel. WTI prices were at around $56.40 per barrel when reports last came in. We have discussed the oil story extensively with experts about the fall in prices because of geopolitical tensions in Iran and what the president's reaction has been to it. But isn't there the looming global recession which is actually bringing prices down and will bring prices down further? So usually if these kind of tensions would happen, then oil will go to record levels, but I think it is because of surplus supply and low demand that oil prices are still stable in the 60-65 range, and I think that continues to be the long term story really. और चलते चलते सराफा बाजार पर एक नजर। आभूषण निर्माताओं की मांग कम रहने से दिल्ली सराफा बाजार पे सोना 140 रुपए की गिरावट से 35,730 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी भी 150 रुपए सस्ती होकर 42,150 रुपए प्रति किलो पर दर्ज हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूयॉर्क के स्पॉट बाजार में 31 जुलाई को होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले निवेशक सतर्क रहे और सोना मामूली बढ़त के साथ $1,418.80 प्रति आउंस पर था। चांदी भी तेजी के साथ $16.51 प्रति आउंस पर थी। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो हमें चर्चा भी यहीं समाप्त करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद सुनो।
And before we close, a reminder of the headlines. Breaking 6 sessions, falling trend. Domestic stocks close marginally higher. Sensex ends at 37,883. Nifty settles at 11,284. Rupee appreciates 15 paise against US dollar. And Brent crude prices log modest gain amid geopolitical tensions over Iran. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.